Welcome to HM Online Academy. HM Online Academy में भलीकार. Today is a very interesting lecture, Scalars and Vectors. In this lecture we will discuss about the scalars and vectors. First we discuss about the physical quantities. What is physical quantities? Those quantities which can be measured are called physical quantities. उहे क्वांटिटीज़ जंहिंखे असीं माप करे सघूं मेजर करे सघूं उनखे असीं फिज़िकल क्वांटिटी चऊं था. लेट सपोज लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन and momentum. These are the quantities which can we measure, that is said to be physical quantities. लेंथ के असीं माप करे सघूं था, मास के भी असीं माप करे सघूं था, टाइम के भी असीं माप करे सघूं था एंड एक्सेलरेशन के भी माप करे सघूं था, मोमेंटम के भी माप करे सघूं था. That is said to be physical quantities. Non-physical quantities, those quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. Let's suppose, say for example, like wish, it cannot be measured, but we can say that it is a non-physical quantity. Sorrows, hate. हमेशा क्वांटिटी ॿिनि क़िस्मनि जी थींदियूं आहिनि. हिकु फिज़िकल क्वांटिटी जेके असीं मेजर करे सघूं था, ॿी हूंदी आहे नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जंहिंखे असीं माप नथे करे सघूं बट वी कैन फील इट, असीं हुनखे फील करे सघूं था. फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू क्वांटिटीज़. नंबर वन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड नंबर टू वेक्टर क्वांटिटीज़. Scalar quantities are that length, mass, time, current, temperature and amount of substance. These are the scalar physical quantities. And vector quantities are those quantities, let's suppose velocity, displacement, acceleration, force, torque and velocity, fraction. These are the vector quantities. Now we will define the scalar quantities. What are the scalar quantities and how we can define it? So the scalar quantities, those physical quantities which cannot be specified by direction but having magnitude is said to be scalar quantities. वह quantities जंहिंखे डायरेक्शन न हुजे, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ only and only having magnitude, जंहिंखे मैग्नीट्यूड हुजे उनखे असीं स्केलर क्वांटिटीज़ चऊं था. हिते हाणे हिकिड़ो सवाल थिए थो त व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड हूंदो छा आहे? मैग्नीट्यूड इट शोज़ द नंबर. लेट्स सपोज हिते मां लिखां थो मैग्नीट्यूड. त मैग्नीट्यूड हूंदो छा आहे? Magnitude, it shows the number. It shows the number. Magnitude number के शो कंदो है. Any number. Let's suppose 5. 5 is a magnitude. 5 is a number. Any number. Let's suppose it is a number 5 kg. kg it shows the quantity. जॾहिं क्वांटिटी सां गॾु को बि नंबर ईंदो, दैट इज़ सेड टू बी मैग्नीट्यूड. असीं हुनखे मैग्नीट्यूड चवंदासीं.
पर स्केलर क्वांटिटी जंहिंखे मैग्नीट्यूड हुजे पर डायरेक्शन न हुजे दैट इज़ सेड टू बी स्केलर क्वांटिटीज़। उन में असांजो एग्जाम्पल आहे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी and pressure, temperature, energy, work, power. These are the examples of scalar physical quantities. Scalar quantities cannot be added, subtracted, multiplied and divided by arithmetic rule. जेके स्केलर क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि उहे न कि एड थी सघंदियूं आहिनि, न कि सब्ट्रैक्ट थी सघंदियूं आहिनि, न कि मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड थी अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक रूल्स। सो नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ those physical quantities which can be specified by magnitude having direction is said to be vector quantities. अहिड़ी क्वांटिटीज़ जंहिंखे मैग्नीट्यूड भी हुजे, यूनिट भी हुजे एंड डायरेक्शन भी हुजे is said to be vector quantity. Say for example displacement, velocity, acceleration, momentum and force. Displacement जेको आहे वेक्टर क्वांटिटीज़ खे शो करे थो। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेक्टर्स कैन बी एडेड, subtracted, multiplied, divided by arithmetic rule. It is denoted by the arrow. वेक्टर्स खे असीं हमेशा एरो सां डिनोट कंदा आहियूं। लेट्स सपोज त वेक्टर्स जेको हूंदा आहिनि उहे एरो सां डिनोट थींदो आहे। अच्छा, एरो या ॿ पार्ट थींदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे दिस इज़ कॉल्ड हेड एंड दिस इज़ कॉल्ड टेल। जेका ही पॉइंट हूंदी आहे उहा हेड, एरो जी हेड खे शो कंदी आहे एंड दिस इज़ कॉल्ड टेल। वेक्टर्स खे असीं ऐड भी करे सघूं था, डिवाइड भी करे सघूं था, मल्टीप्लाइड भी करे सघूं था बाय अर्थमेटिक रूल। त असीं वेक्टर्स में ॾिठोसीं त जंहिंखे मैग्नीट्यूड हुजे, डायरेक्शन हुजे, यूनिट हूंदो। जंहिंखे यूनिट हुजे, डायरेक्शन हुजे, मैग्नीट्यूड हुजे, उहा जेका हूंदी फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर खे शो कंदी। लेट सपोज मैग्नीट्यूड खे असीं डिस्कस कयो त सपोज कयो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट और वेस्ट, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेस्ट की तरफ। लेट सपोज ये असीं डायरेक्शन करूँ था। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस इज़ कॉल्ड साउथ, दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड ईस्ट। छाकाणि त असीं डिस्कस कयोसीं त डिस्प्लेसमेंट खे जंहिंखे वेक्टर अहिड़ी क्वांटिटी जंहिंखे डायरेक्शन हुजे, मैग्नीट्यूड हुजे, यूनिट हुजे, उनखे असीं वेक्टर चऊं था। सपोज कयो जेकॾहिं हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे त मूव करे थो ईस्ट जी तरफ़ 5 मीटर डिस्टेंस, त उहो छा कंदो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कंदो, छाकाणि त इनखे पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलियल आहे। सो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity. Acceleration, it is a vector quantity. Velocity, it is a vector quantity. अच्छा, वेक्टर्स खे असां ऐड भी करे सघूं था। लेट सपोज त ही ए वेक्टर आहे 5 सेंटीमीटर, इन जो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ़ आहे, ऐं बी वेक्टर असांजी आहे 10 सेंटीमीटर। त हाणे असीं छा कंदा, त ॿिन्ही जो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन आहे, त असीं हिन जो रिज़ल्टेंट फाइंड कंदा। रिज़ल्टेंट फाइंड करण लाइ असांजी फार्मूला आहे ए प्लस बी, ए वेक्टर एंड बी। सो ए जो आहे 5 प्लस बी जो आहे 10,
त असांखे रिज़ल्टेंट वेक्टर 5 सेंटीमीटर मिलंदो. सो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में असीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में डिस्कस कंदासीं ऐं उन में असीं ॾिसंदासीं त हाउ द वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड and how we can find the resultant vectors by Pythagoras theorem, by head to tail rule, and by the parallelogram.